Let us see the electric field lines for different charge systems. It is most important and it will be questions for already mu a diagram ta kori dechi for point charges. First point jo thila amara, and that means isolated point charges. Let us take the point charge is positive, and in this case isolated point charge which is negative. Positive charge ପାଇଁ देखो electric field is directed away. Away माने positive charge रो दूर को जिबो field. देखो all the arrow mark direction is directed away. तीर चिन्ह टा बाहर को अछि. सेति काई ए field direction टा outward. The only thing, see, मु एठी gap रखिछि. भाबिबनी actually एठी gap अछि. एठी gap रखिछि कोन ना actually मु एठी arrow रो length को represent करिया ପାଇଁ एठी gaps रखिछि. ता meaning कोन जदि मु पॉजिटिव चार्ज रो धीरे धीरे दूरे दूरे जीबी इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्ट्रेंथ ग्रेजुअली कमी जीवो मु सेति पय एटी गैप अछि एक्चुअली गैप रोइबनी किंतु मु एटी तुमको सेटा एक्सप्लेन करिया पय आई हैव टेकन सम गैप्स एटी लेंथ ऑफ द एरो डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड तार एटी मीनिंग हला कोन ना हियर फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे and the length of the arrow gives you the strength of the field at a particular point. ताले मन रखो closer the point, stronger will be the electric field strength. So also for negative charge, the only thing is here the direction of the arrow is towards the negative charge. How किछि difference नहीं. आंका भीतर difference किछि नहीं. Only thing is arrow mark that is directed outward. Here the arrow mark is directed towards the negative charge. Then it is the most important point here, two equal and opposite point charges. Questions will come. Point charge question पचारिबो दिटा equal and opposite nature charges अछंती ताको पई तमे field lines draw करो. So this is the shape of the electric field lines. एटी देखो कोन ना actually जदी ए चार्ज न थांता negative charge न थांता so field lines will be like this. आगो तमे continuous कर दी थांता आको continuous कर देथिले the field lines will be like this. It will extend up to infinite. जदी positive charge न थांता तले एटा हे थांता continuous, but the direction of the field will be towards the negative charge. माने जदी एटा न थांता एमती थांता डायग्राम एटा नथिले तमाने एटा नथिले एमती थांता डायग्राम किंतु दुजन जाका गोटे जगह रे अछंती ता माने कोन हो ये पॉजिटिव चार्ज रो फील्ड नेगेटिव चार्ज रो फील्ड विल इंटरैक्ट ताको हमें डायग्रामेटिकली केमते देखेबा ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे ताले एटी कोन हुए ना एई फील्ड लाइंस गुडा इन्फिनिटी पर्यंत बा इनफाइनाइट पर्यंत एक्सटेंशन थांता जेतु नेगेटिव चार्ज अछि पॉजिटिव टू स्टार्ट हे नेगेटिव रे एंड हे गला त माने आपको हम एमती कहि परिबा दे ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट lengthwise. Here the field lines try to contract lengthwise. कहीं length टा infinite पर्यंत जाई थांता किंतु जेतु नेगेटिव चार्ज पाइला field टा contract हे नेगेटिव चार्ज रे एंड हे गला. Then comes your two equal and positive point charges. दीटा equal और positive point charges अछि. हमें दीटा equal negative point charges भी नहीं कर थांते. त तांको पई this is a pictorial presentation of field lines. कोन ना ये positive जदि इटा न थांता तले डायग्राम में एमती थांता जेतु दीटा पॉजिटिव चार्ज अछि त माने दीटा ए टाइप रो नेचर रहला सिमिलर चार्जेस दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर रिपल्सन को हमें एटी कोन डिनोट करले ए टाइप रो माने जनकर फील्ड आ जन को इन्फ्लुएंस करिवरो दे विल ट्राई टू द फील्ड लाइंस दे ट्राई टू जस्ट डाइवर्स निजे जेठरो दूरे जीवा को चाहउचंती सो देयर वी गेट अ रीजन वेयर माने दुजन चार्ज को पाई किछि भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहिबो नाही. At this point, जदि मु गोटे आउ any amount of charge रखिबी any amount because these two charges are equal plus q एठी आउ जे कोन से amount of charge रखिबी ता ऊपर ए दुजन जाक किछि भी इन्फ्लुएंस पकई परिबे नाही. एई पॉइंट को कहा जाय न्यूट्रल पॉइंट मन रखता. न्यूट्रल पॉइंट माने जोटी इलेक्ट्रिक फील्ड रो इंपोर्टेंस नथिबो बा सेठी एक्जिस्टेंस ही नथिबो इलेक्ट्रिक फील्ड because the two field they cancel here. Then the most important point here, like for a positively charged conducting plate, यदि गोटे तम पाखे धर गोटे प्लेट टे अछि ताको हम किछ पॉजिटिव चार्ज दे देली ताले एटा ताको पई इलेक्ट्रिक फील्ड हियर द पैरेलल एरोज को हमें रिप्रेजेंट कर पारे देखो पॉजिटिव चार्ज बोथ साइड एपटे थिबो सेपटे थिबो धर एटा कटला प्लेट ता
प्लेट रो एपट साइड भी अछि एपट साइड भी अछि अच्छा थिकनेस जो तमे आमे तार एज इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देले ताले हम एठी फील्ड लाइंस केमति पाइले ना एपट डायरेक्शन रे टुवर्ड्स राइट एपट डायरेक्शन रे टुवर्ड्स लेफ्ट दिस इज फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट मन रखो then let us differentiate between uniform and non-uniform field this is most important usually uniform field को equispaced or parallel arrows रे हमें represent करो equispaced parallel arrows बुझियला spacing समान रहइबो parallel arrows रे हमें uniform electric field को represent करो and non-uniform field माने गोटे region रे field line रो concentration बहुत अधिक दिखेबा आ गोटे जगह रे कम दिखेबा ताले एटा को हमें कहबा non-uniform electric field this is non-uniform also the field produced by the point charges they are also non-uniform काहे कि ना field रो strength ता सब पॉइंट रे समान न थाए एटी कोन वे ना ग्रेजुअली यदि हमें पॉइंट चार्ज रो दूरे की जिबा तले फील्ड रो स्ट्रेंथ ता ग्रेजुअली कमी जाय सेति में दिस फील्ड्स आर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड रो कांटेक्ट रे हमें आसीबा पछरे बुझिबा से विषय रे आ खाली एटी गोटे छोटा पॉइंट मु ऐड करियो चाहूची एथरे भी क्वेश्चन पचारि परियो सपोज टू अनइक्वल मैग्नीट्यूड रो चार्जेस थिबे एटी को प्लस क्यू इक्वल नै छी बेले बेले दुटा अनइक्वल चार्जेस दे देथिबे सपोज एटा थिबो प्लस 10 कूलम एटा दे देथिबो प्लस 2 कूलम ताले सिंपल लॉजिक मन रखो प्लस 2 10 कूलम यारो इंपोर्टेंस बहुत अधिक रहइबो लेट्स से दिस इज प्लस 10 कूलम एंड दिस इज प्लस 2 कूलम बुझियला ताले कोन हबो जेतु यार मैग्नीट्यूड बहुत अधिक अछि ताले यार इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अधिक रहइबो यार कम रहइबो ताले कोन हबो ये न्यूट्रल पॉइंट ता टिके जो चार्ज रो मैग्नीट्यूड कम अछि से आरे टिके शिफ्ट हे जिवो मन रखिता जदी बुझियला न्यूट्रल पॉइंट टिके एपट को शिफ्ट हे जिवो सिमिलर सेम क्वेश्चन से एटी भी पचारि परिबो ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज धर आर मैग्नीट्यूड बहुत अधिक रहइबो मैग्नीट्यूड अधिक माने मन रखिता फील्ड लाइंस आल्सो काहे ना हम कहूची इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड ऊपर डिपेंड करे त जदी यार अधिक फील्ड माने अधिक स्ट्रेंथ रहला चार्ज रो ताले ई कोन करिवो गोटे स्ट्रांग फील्ड प्रोड्यूस करतिवो इन कंपैरिजन टू दिस ताले एठु हम तोले पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देखैबा एठु अधिक नंबर रो फील्ड लाइंस नोबा एटी कम नंबर रो फील्ड लाइंस एंट्री करेबा दैट इज द डिफरेंस मन रखितो क्वेश्चन सेठी आसीबो आ गोटे जिंसो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कंसंट्रेशन माने कोन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हम जदी नै जिवा दैट विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड त जो रीजन रे मन रखि था धरो ए रीजन को कंपेयर करो ये गोटे रीजन देखो एदी दुटा एक एरिया नै गली एठी देखो सबुतक फील्ड लाइंस ए एरिया भीतर पास करके जाउछन्ती एठी सबुतक फील्ड लाइंस पास करके जाउ नांती त माने ए रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अधिक ए रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम त माने concentration of the field lines will give you the idea about the strength of the field or electric field at a particular region.